Venkat ji, good morning. Namaste. Absolutely great honor. Yes, sir. Like I was mentioning to sir, always a pleasure to be coming on our university's platform. This being the first one, so let us expect that, sir, this is the start of multiple activities to commence. Definitely. पांडे जी नमस्कार। पांडे जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? मैंने नमस्ते बोला। ठीक है, बहुत अच्छा है। हमारी बड़ी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कई स्टूडेंट्स आपको अप्रोच किए थे पीएचडी कराने के। जी 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 हाँ जी हाँ। उस समय से हम लोग ब्रिजेश शुरू करो। Yes sir, yes, start. Yes sir. Good morning, respected sirs and ma'am. The chief guest and patron of FDP on examination reforms, Honorable Professor J.P. Pandey sir, the Vice Chancellor of Madan Malaviya University of Technology, Gorakhpur. Guest of honor, Professor S. Chatterjee sir, Professor NITTR Chandigarh and AICTE mentor. Excellencies, teachers, distinguished delegates, scholars, ladies and gentlemen, a very warm good morning to one and all. We at Madan Malaviya University of Technology are greatly honored to host the one-week faculty development program on examination reforms organized by Electrical Engineering Department, Madan Malaviya University of Technology, Gorakhpur, and sponsored by All India Council of Technical Education, that is AICTE. On behalf of Madan Malaviya University of Technology, Gorakhpur, it's my great pleasure to extend cheerful welcome to you all. Now, we are lamps all having light of our own, fueled by some passion. But when we find other lamps, it adds to the luminescence and it becomes a beautiful pattern. Now it's the time to kindle the auspicious lamp, followed by virtual flower showering on portrait of Goddess Saraswati Ma and Malaviya ji to embark on today's proceedings. Audio is missing, sir. Sir, continue ahead. I think some technical issues there, sir. Continue. Okay. Yeah, no issue.
Continue, please. Now I request everyone to please stand up in the honor of our Kulgeet. So you can check the sound also, right? So that will be better. Okay, sir. Okay, sir. I'm just checking, sir. Just try once again. Otherwise, we'll proceed. Dr. Abdesi, can you proceed further if technical glitches? Sure, sir. Sure, sir. So we assume the Saraswati Vandana and our university Kulgeet to be completed, and then we'll proceed further. Soumya. Okay, sir. Thank you, sir. Now, a welcome address by Professor Brijesh Kumar, sir, Professor Electronics and Communication Engineering Department, and also the Registrar of Triple MUT Gorakhpur. Thank you very much. Good morning, everyone. A very warm welcome to our Honorable Vice Chancellor, Professor J.P. Pandey, sir, who is the chief guest of today's program. Professor S. Chatterjee, sir, who is the guest of honor of this opening ceremony. And among us, a special guest, Colonel B. Venkatesh, ex-director FDC, Faculty Development Cell, AICTE, New Delhi, who has really supporting by converting this MOU between AICTE and Madan Mohan Malaviya University of Technology. Thank you very much, sir, for this to converting our idea into reality. Deans of the university, head of departments, faculty members from different institutions, our own institution, and on behalf of Madan Mohan Malaviya, we assume that this 1 week FDP program surely help you out how to this, because the theme of this program FDP is examination reforms. So that will be from 26th to 30th March. On behalf of me, I also thanks to our welcome Professor Anil D. Sasbudde sir, Chairman AICTE New Delhi, and coordinators for this program from AICTE, Dr. Amit Kumar Srivastava, who is currently looking after the Director, Faculty Development Cell, AICTE Headquarters, Professor A.N. Tiwari ji, Controller of Examination, Madan Mohan Malaviya University of Technology, University Program Coordinators, Dr. Shekhar Yadav, Assistant Professor, Electrical Department, Dr. Abdesh Kumarji, Assistant Professor, Electrical Department, who has really worked hard to convert this our idea into this present form. Apart from this program session wise, I will just point it out. Dr. G. Janardhan will take teaching and learning assessment session 2 based on the introduction to AICTE examination reforms in view of NEP 2020. Because this NEP 2020 is a lot of changes are incorporated in the education system. So that's why our Honorable Vice Chancellor sir motivated us to conduct first event of examination reform that jointly organized by AICTE and MIT Gorakhpur. Session 3, Introduction to Outcome-Based Education. This all the 3 sessions of 26 March, whereas 27th March 2022, session 4, Dr. Suhas Deshmukhji, need importance elements of OBE, POs, competency and performance indicator for program outcomes. Then session 5 based on will be taken by Dr. U.S. Sahuji,
understanding graduate attributes, competency and performance indicators. Dr. V. Sanmogandi, who will take assessment of professional outcome and address higher ordering thinking skills. Whereas on 28 session 7, that Dr. P. Malingaji, assessment, planning and preparation of SEE model question paper with COs and PI and VL based. Session 8 based on the Dr. K.S. Giridharan, US that use Bloom's taxonomy for design of questions. Among us, who are presently special guest, Colonel B. Venkatesh, sir, AICTE quality initiatives and opportunities for financially funded schemes. Second, last day, 29th March, session 10, that use of rubrics of assessment of professional outcomes. Dr. Dinesh Kumar, KSA, guidelines for setting the question paper. Professor P.K. Tulsi, discussion on the shortcomings of question paper set by the participant. So that is a part of this our FDP also. And last day of 30th March, session 13, Engineer B. Sivakumar, open-ended experiments. And last session, as suggested by NEP also, and mandate of Education Department. So last 14th, second last session on art of living or stress management. How we can just manage our stress in a present scenario. So that is session 14. Last session for that is 15, internal experts, concluding remarks and quiz and feedback. So that is the whole theme of this 1 week FDP online FDP program. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Professor A.D. Sastapujit sir, Chairman of AICTE. Actually, I think he is Soumya ma'am, he is not there. He is not Okay, there. sir. Please, I request Professor S. Chatterjee sir to enlighten us, sir, with his vast experience, sir. Professor S. Chatterjee sir. Okay, thank you so much for giving me this opportunity to be among all of you. And at the outset, I must congratulate Madan Mohan Malaviya College, University of Technology, and my special thanks to the Honorable VC, Professor J.P. Pandey, whom I know earlier also, from early days also, and who has taken a lot of initiative in doing this course. And I'm definite that this 1 week FDP program for the faculty members of technology, engineering colleges and technology will help them to be benefited in a very, very large way. And this is what is the requirement. This is the requirement of the day and the hour, I would say. And as you all know, that AICTE has done a lot of work in improving the education, and by giving the NEP, that is New Education Policy 2020, my hats off to the people who have really drafted the policy and the document. It is so well written and so well explained, and it is also of uttermost importance to raise the education level in the country. Well, my thanks also to Colonel Venkatesh, who has also taken a lot of initiative in running these programs and who very often sends us mails regarding this. And 30th March also, that's a very important program, and that is also be highly benefited for all of us, and we will definitely attend that course, sir. Well, at this juncture, I would definitely like to stress on the point that Dr. Avdesh, who happens to be my student, Dr. Avdesh, the Assistant Professor of Electrical Engineering Department, Avdesh Gupta, he happens to be a student of mine
He did MTech from NITER Chandigarh when I was heading the electrical engineering department. And also Dr. Shekhar, who has been doing a very hard work, very hard labor in doing this course, a wonderful one, this program and taking it to a wonderful level. Well, I am sure that with these 5 days, a lot of learning will take place, and my good wishes to all the faculty members, to all the faculty members, to the students of not only Madan Mohan Malviya University, Gorakhpur, but all those who are joined this program, and it will be highly benefited. This is 100% sure. So with these words, I would like to wish the organizers a very happy going of this function, and I'm sure that it will be a grand success. Thank you so much. Once again, my special thanks to Honorable VC Professor J.P. Pandey, Dr. Gupta, and Dr. Chandrasekhar, who have done a very remarkable work, and I'm sure that will be a grand success. Thank you all. Thank you very much, sir, for your blessing, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir, for your valuable words. I would now request the Honorable Chief Guest of... Wait, sir. So, ma'am, please. Okay, I request Colonel Venkat, sir, ex-director, Faculty Development Cell, AICTE, to say some few words, sir. Colonel Venkat, sir. Avdesh, thanks a lot. It's an absolute honor to be coming on your platform, Sir. Madan Mohan Malviya University of Technology, and I sincerely thank the Honorable Vice Chancellor, Sir, Dr. J.P. Pandey, sir, and Brajesh Kumar, sir, and Avdesh, sir, yourself, because I understand and appreciate the way this particular MOU was concluded, and the way that there was an enthusiasm in your university to get these programs done. And that is what leads us to always appreciate and understand that education is something which is a never ending. It does not limit to any age limit or anything. The way your university actually came forward in conducting these programs, I think it was an example for us also at AICTE to get that much more motivated in conducting these programs. So the credit for this goes to your university, sir, and ably led by the visionary Vice Chancellor, sir. It's so honorable to listen to Professor Chatterjee, sir, in today's forum, and the zeal and the enthusiasm with which sir was speaking. I think, sir, we have done hardly anything till now as far as the education is concerned. Singly, in case if you wish to know, we can contribute collectively many more things. We can collectively come forward and take the education to an absolute greater heights. And to that, I compliment everybody for taking on the mandate of the MOU towards conducting of the training programs for faculty members, subsequently to librarians, and then even to the non-teachers. So it's in a sequential manner. Quite obviously, you people would have spaced it out, but suffice to say that today when we are connected, we are doing the first of the programs. And what an apt topic that has been chosen. Let me also tell you, I have been at training programs, multiple training programs. I am yet to see a faculty development program at university level being done on examination reforms. So this is one of the first for me also. And this is where I say that your university takes the lead in many activities. Hopefully the people who have got connected, participants from across the university, multiple other institutes of Uttarakhand and across the country will be benefiting from this, and they will go back a much better person at the end of this training program. And I can see the list of speakers that you people have called, all very capable, qualified. And when best speakers speak, it is for us to take the best from them and then make sure that we implement it as in our day-to-day teaching and learning process. Compliments to everybody, sir. Best wishes. Jai Hind. It's a pleasure and honor to be connected with you always. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Yes, please. Continue. Pleasure. Thank you, sir, for your valuable words. Now, I would now request the Honorable Chief Guest of Inaugural Function and the Patron of FDP on Examination Reforms, Professor J.P. Pandey, sir, to please address the audience and shower his esteemed blessings upon each one of us.
आज मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर और AICTE के जॉइंट कोलैबोरेशन से आयोजित होने वाले इस 1 वीक जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर, उसके लिए सबसे पहले मैं प्रोफेसर सहस्रबुद्धे सर को और AICTE की पूरी टीम को और स्पेशल थैंक्स टू कर्नल वेंकट, जिन्होंने इसको हमारा जो MOU था उसको इनिशिएट कराया और MOU को फाइनल शेप में लेके गए। और उन्होंने कर्नल वेंकट साहब ने बड़ी मदद करी हम लोगों की विश्वविद्यालय की, और उसके कारण से तो स्पेशल थैंक्स टू कर्नल वेंकट एंड प्रोफेसर सहस्रबुद्धे सर, उनका और उनकी पूरी जो टीम है उनका हार्दिक अभिनंदन है इस 1 वीक FDP में। आज इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर चटर्जी, वो हमारे पुराने गार्जियन भी हैं, सीनियर हैं हमारे, और वो भी जब भी कभी उनको हम लोगों ने अप्रोच किया कि हमें आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? ब्रिजेश कैन? यस एवरीवन प्लीज सर। या सी, तो उन्होंने जब भी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ी उसमें काफी सहयोग किया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन इस FDP में। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इस FDP के AICTE की तरफ से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी, और विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर AN तिवारी, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर शेखर यादव और अवधेश कुमार, इन सभी का, और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स, जो दूसरे विश्वविद्यालय के हैं फैकल्टी मेंबर्स, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस जो हमारी विश्वविद्यालय की टीम है और AICTE को हम बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों को ये अवसर दिया उन्होंने, AICTE ने, कि हम लोग एक फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं और डिफरेंट टॉपिक्स पे कराएं। जब हमारे पास आया तो हमने जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको बोला कि सबसे पहले AICTE ने डाल रखा है एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर, और एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर हम लोग करते हैं और मल्टीपल करेंगे। जैसे अभी आज एक पहला FDP है, कुछ दिनों के बाद हम लोग उसको एडवांस करते जाएंगे। अभी आज एलिमेंट्री हमारे जितने भी स्पीकर्स होंगे वो देंगे, देन वी विल गो इन एडवांस मैनर। हम लोगों ने ये टॉपिक इसलिए चुना कि AICTE की तरफ से एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर एक मैनुअल बहुत पहले रिलीज किया गया था, लेकिन मैं चूंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में मैंने कई यूनिवर्सिटीज में और काफ़ी अच्छे समय तक सर्विसेज दी हैं, तो इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हमारे पास एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर क्या करना चाहिए था, और हम उस दिशा में उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं KNIT का डायरेक्टर हुआ तो हमने एक पूरा करीब 40-45 पेज का जो AICTE का वो मैनुअल है एग्जामिनेशन रिफॉर्म का, वो मैंने प्रिंट किया, अपने ऑफिस को बोला प्रिंट करने के लिए, और हम अपने कंट्रोलर को बुलाए, और एडिशनल कंट्रोलर KNIT के थे, उनको मैंने दिया कि ये आप एग्जामिनेशन रिफॉर्म है, इस पे हम लोगों को काम करना है। क्योंकि अभी NEP तो अभी 2020 में आई, हम 2017 की बात कर रहे हैं, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना नहीं चाहते, और पढ़ते हैं तो उसको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है वो नहीं करते। और आज तक कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, उसका मेथोडोलॉजी क्या है। एक जिसने किसी ने बना रखा होगा शुरू में कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब सेशंस होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर कभी भी थर्ड प्रोसेस कंटिन्यू नहीं किया गया, और कभी डिबेट नहीं हुआ, कभी डिस्कशन नहीं हुआ कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। AICTE ने शुरू किया इसके उनको क्योंकि आज भी अगर बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स से पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर जो बना हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में हम लड़के का क्या असेसमेंट करना चाहते हैं, और क्या क्या असेसमेंट हमारा आउटकम आएगा जब ये क्वेश्चन पेपर लड़का हमारा, ये हम आपको 2000 NEP और ये जो NBA ने रिगरस ट्रेनिंग कराई हम लोगों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर, तब जब NBA में प्रोफार्मा भरने जाने लगा, तब लोगों को लगा कि नहीं नहीं साहब ये है वो है। 2017 में मैंने KNIT में
जो क्वेश्चन पेपर था, मैंने उनको बोला कि आप लड़के को बताओ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से, किस, जो आपका जो AICTE का जो मैनुअल था वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म का, उसमें K1 to K6 जो एक मैट्रिक्स है, उसको हमने कहा कि लड़के को बताओ तो सही कम से कम। तो हम लोगों ने क्वेश्चन, आपको बताओ इतना रेजिस्टेंस आया फैकल्टी मेंबर की तरफ से, अरे ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में जगह की बर्बादी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बर्बादी तो होती है बहुत सारी चीजें, लेकिन आप इसको बनाएंगे और टेबल बनाइए। क्या है कि हम कोई भी यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, हम सभी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हमें कोई अपने कमी को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम ये नहीं सोचना चाहते कि ये हम क्यों बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम क्यों करें। इसका सबसे पहले पूछते हैं कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस तो हम सिखा ही रहे हैं कि आपको पर्पस क्या है। तो हम लोगों ने काफी प्रेस करके फैकल्टी मेंबर से कहा कि क्वेश्चन पेपर बनाओ और उसके पीछे एक टेबल दो, मैट्रिक्स बनाओ हमारा K1 ये 2017 की जो हमारा इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ KNIT में, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में लेके आए। ये मैं प्रैक्टिस कैसे लेके आया, मैं चेयरमैन था NBA की एक विजिट में, सो वी वर आस्किंग कॉलेजेस टू प्रोड्यूस क्वेश्चन पेपर की जो AICTE को कंप्लाई करता है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है। तो ये चीजें हैं, ये पहल इसलिए करनी हम लोगों को एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर पड़ रही है और अभी आगे लगातार करनी पड़ेगी। अब देखिए NEP आया, NEP में और भी सारा चीजें हम माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं। हम बच्चे को मल्टीपल एंट्री दे रहे हैं, मल्टीपल एग्जिट दे रहे हैं। जब मल्टीपल एग्जिट दे रहे हैं तो हम लड़के को, जैसे ये इंजीनियरिंग है, इनसे कोर्सेज हैं, फार्मेसी कोर्सेज है, कोई भी हमारा जो असेसमेंट होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। कैसे हम साइंस इसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, कैसे हम असेसमेंट कर रहे हैं, और इस असेसमेंट से इस बच्चे को क्या फायदा होने वाला है, और हमारा जो पर्पस है असेसमेंट का, वी आर गेटिंग सैलरी, वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग डिग्री। तो बेसिक पर्पस ये तो है नहीं कि हमारे को सैलरी मिले, बेसिक पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट को कैसे अच्छी शिक्षा दें और वो एम्प्लॉयबल हो और सोसाइटी को जाके उसको डिलीवर करें जो उसके पास उसकी एबिलिटी है। तो ये सबसे पहले एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हैं। और मैं वेंकट साहब आपको बताना चाहता हूं, ये अभी हम लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर स्पेशली करना है, क्योंकि बहुत कमियां हैं। मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहा यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो इस समय AICTE का भी मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहा। मैंने भारत सरकार के एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में देखा। मैंने पाया कि हम लोगों को अगर रिफॉर्म करेंगे, बच्चों की सहूलियत के लिए रिफॉर्म करते हैं हम, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। ऐसा है कि आप ये मानिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म में और कैरिकुलम रिफॉर्म में क्या कैरिकुलम आप रिफॉर्म कर सकते हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं। असेसमेंट में अब आपको एक नमूना बताऊं, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो AICTE ही बोले क्योंकि पुराना नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, तो AICTE अगर बीटेक करना है किसी लड़के को तो उसे 50 सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं। क्रेडिट में हम नहीं जानते, 50 सब्जेक्ट हैं उनके पास बीटेक में टोटल। लेकिन एक कंप्यूटर साइंस का बीटेक का लड़का है, अगर उसका गलती से फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में बैक पेपर आ गया और उसे वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो पास नहीं कर पाएगा बीटेक। हमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म के माध्यम से, अपने जो एग्जामिनेशन के ऑर्डिनेंस में मॉडिफिकेशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देना, जबकि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की उसके पूरे 50 सब्जेक्ट में वो 49 सब्जेक्ट क्लियर कर चुका है, बट ही इज फेलिंग 1 सब्जेक्ट और वो बीटेक में राटका पड़ा है। ऐसे आपको बताऊं 2016 व्हेन आई ज्वाइंड एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इन AICTE, तो हम लोगों के पास 45,000 लड़के ऐसे थे जो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, और वो भी मोस्टली फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में। होता यह है जैसे कंप्यूटर साइंस का बच्चा है और वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फेल कर रहा है और कीप ऑन फेलिंग, तो हमें कोई एक विंडो देनी पड़ेगी कि आप ठीक है इतना क्रेडिट पास करके जाओ और आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। और इंजीनियरिंग पेपर नहीं, उसको कह दो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बराबर का क्रेडिट कोई दूसरा क्रेडिट लेके पास करके जाओ। हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन के रूल्स में रिफॉर्म करा, एक ग्रेस मार्क्स दिया जाता था। ग्रेस मार्क्स देने में क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हर वर्ष, हर ईयर में a student can get maximum 10 grace marks but not more than 5 marks in one subject। ये एक रूल था एग्जामिनेशन का AICTE का। तो अच्छा,
उसमें क्या हुआ कि जब हम लोग कोई भी रिफॉर्म करते हैं या कोई भी केस बनाते हैं या कोई भी फार्मूला बनाते हैं, तो वो बेस्ड ऑन जो मेजरमेंट्स आते हैं, मेजरमेंट्स के बेसिस पर सिमुलेट करते हैं। तो हम लोगों का क्या हुआ कि हमें लगा कि एक लड़का आया जो फाइनल ईयर के 7th सेमेस्टर में ही गॉट कैरी ओवर एंड ही नीड 11 मार्क्स ग्रेस के चाहिए थे उसको क्लियर करने के लिए। उसको हम नहीं देते, उसको हमने कहा हमारा ऑर्डिनेंस परमिट नहीं करता है और आपको वी कैन गिव यू मैक्सिमम 5 मार्क्स। फॉर दैट एडिशनल 6 ग्रेस मार्क्स ही इज गोइंग टू रिपीट 1 ईयर, जबकि उसका फर्स्ट ईयर में ही गॉट 75% मार्क्स, सेकेंड ईयर में 75% मार्क्स, थर्ड ईयर में 75% प्लस मार्क्स थे उसके, बट फाइनल ईयर में अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गया और उसको वो 14 नंबर आए उसके, 11 नंबर उन्हें 19 नंबर आए, 11 नंबर और चाहिए थे, नहीं पाए। तो हम लोगों ने बड़ा सीरियसली थिंक किया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब आप इसमें 2 सिनारियो है। एक मैंने आपको ये केस बताया कि जो लड़का फर्स्ट ईयर में भी 75 पाया, सेकेंड ईयर में भी 75 पाया, थर्ड ईयर में भी 75 पाया, और फाइनल ईयर में एक पेपर में वो गलती से 11 नंबर का ग्रेस उसको प्रॉब्लम है। अब दूसरा सिनारियो देखिए जो हमारा रूल कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में भी 10 नंबर का ग्रेस लेके क्लियर हो गया, फर्स्ट ईयर इज क्लियर, सेकेंड ईयर में भी 10 नंबर का ग्रेस लिया, थर्ड ईयर में भी 10 नंबर का ग्रेस लेके क्लियर हो गया, और फाइनल ईयर में भी ग्रेस लेके 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, मान लो आप। तो अब आपके पास 2 बच्चे हैं, 2 बेंच मार्क्स हैं। एक बच्चा जो ऑलराउंड 75 प्लस है, बट अनफॉर्चुनेटली ही नीड्स 11 मार्क्स इन 1 पेपर, और आपका एक लड़का ऐसा है जो हर साल 40 नंबर ले गया अपना, जो ऐसा हमारा क्राइटेरिया है। तो हमारा जो रूल है वो मिसयूज हो रहा है बाय समबडी, एंड जो अच्छा लड़का है उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं, ही विल हैव टू रिपीट 1 ईयर। तो हम लोगों ने, जो उस समय वाइस चांसलर थे विनय पाठक जी, और इस पे काफी मंथन किया कि चलो कैसे करना है। हम लोगों ने रिफॉर्म लाया कि चलो ठीक है, यू कैन अवेल ऑल 40 मार्क्स इन ऑल योर 4 ईयर्स, मैक्सिमम मार्क्स आप 15 नंबर एक ईयर में भी ले सकते हैं। तो सो दैट कि जो भी हमारा जो स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो आपका एनबीए का है, वो डिप्राइव ना हो। इसके लिए कितना विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि ये हो गया, ऐसे लड़के खराब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जब डिबेट किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अपने एकेडमिक काउंसिल में, हमने कहा कि ये 2 बच्चे बताओ आप, ये एक बच्चा जो हर साल 10 नंबर का ग्रेस मिल के 4 साल में डिग्री क्लियर किया है, एक लड़का जो 3 साल में लगातार 75% मार्क्स पा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली 11 मार्क्स उसको चाहिए, और वो एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा है इन 7 सेमेस्टर, ही विल हैव टू रिपीट 1 ईयर, मतलब उसका जो कैरी ओवर पेपर होते होते 1 साल लग जाता है। तो वो बीटेक कर रहा है 5 साल में, और वो लड़का 40 नंबर के ग्रेस के साथ 4 साल में बीटेक करके मार्केट में चला गया। इस रिफॉर्म को लाने में हम लोगों को बड़ी कठिनाई हुई, एंड विद दिस रिफॉर्म वी हैव क्लियर्ड अराउंड 45,000+ स्टूडेंट्स। तो ये रिफॉर्म कैसे होता है, रिफॉर्म का आउटकम क्या आता है, और रिफॉर्म का इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ता है, वो हम लोगों ने करा है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस विश्वविद्यालय में भी जो हमारे एग्जामिनेशन की टीम है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म को, एग्जामिनेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और हमारा हमने ये कहा है कि जैसे कोई बच्चा बिना पढ़े पास ना हो, बट अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए। क्योंकि इस समय पहले क्या होता था कि एक एग्जाम होता था ऑड सेमेस्टर में, एक इवन सेमेस्टर में। अगर गलती से लड़के का ऑड का कैरी ओवर है तो ही विल हैव टू अपीयर इन ऑड सेमेस्टर। व्हाई नॉट वी कैन गिव अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन ही रिक्वायर, जैसा विदेशों में होता है। वहां तो लड़का आके टीचर से कहता है कि साहब हम तैयारी कर लिए हैं, अब आप हमारा एग्जाम ले लीजिए। तो हमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर बड़ा सीरियसली थिंक करना पड़ेगा। हमारे जो डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं उन्होंने वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे हम लोगों को आगे कैरी ऑन करने के लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने फैकल्टी मेंबर्स को कि जब भी आप असेसमेंट करें तो एनालिटिकल असेसमेंट होता है, बट साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए कि हम असेसमेंट कैसे कर रहे हैं। ऐसा है कि मैंने किसी लड़के की आंसर बुक चेक करी और दूसरे ने चेक करी, उसमें 10% 15% का वेरिएशन होता है। अगर हम साइंटिफिक इवेल्युएशन करेंगे तो ये वेरिएशन नहीं होगा।
10% 15% का वेरिएशन एक लड़के को पास कर सकता है और एक लड़के को फेल करके उसे बैक कर देगा। तो ये बड़ा ही सिंपल मैथमेटिक्स है कि हमें करना ये चाहिए कि हमें साइंटिफिक एक पैटर्न बनाना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन पेपर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, बहुत फैकल्टी मेंबर क्वेश्चन बनाए, बट दे नेवर थिंक कि डिफिकल्टी लेवल हम कहां से चेक कर रहे हैं, कोई नहीं करता क्वेश्चन पेपर। अच्छा, दूसरा आज एक इस समय और अच्छी मतलब ये दिक्कत हो गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, और क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने के लिए तो एक मॉडल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन डेटाबेस बनाएं और क्वेश्चन डेटाबेस के आधार पर हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वही क्वेश्चन पेपर क्रिएट करें। तो क्या होगा कि हमारे उसको हम अपडेट करते रहें और अपडेट करते रहें, उसका मॉडरेशन करते रहें, और अच्छा सा उसके अंदर कंप्यूटर हमारा डिफिकल्टी लेवल फिट इन कर सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, और बाकी मैनुअली नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पेपर का रिम्यूनरेशन देते हैं विश्वविद्यालय, सभी लोग देते हैं, बट कोई भी कट पेस्ट टेक्नोलॉजी से है, एक ही पेपर को वहां के क्वेश्चन उतार के वहां डालते हैं, ये भी एक थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन अच्छा है हम लोगों ने शुरू किया है, और एग्जामिनेशन रिफॉर्म में सबका सहयोग चाहिए और सभी फैकल्टी मेंबर्स का। केवल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का या वाइस चांसलर का या डायरेक्टर का रोल नहीं होता है, यहाँ हर फैकल्टी मेंबर जो उस सिस्टम के अंदर है उस सभी का रोल है इस रिफॉर्म को और अच्छा बनाने में, जो बेस मॉडल हम लोगों को AICTE ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, और हमारा विशेष थैंक्स है कर्नल वेंकट, प्लीज कन्वे आवर मतलब पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से चेयरमैन साहब को हम लोगों का धन्यवाद आप कन्वे करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। पांडे सर, एब्सोल्युटली सर, आपने जो बोला each and every word, and be rest assured sir, I will convey in verbatim to the chairman, vice chairman and member secretary the manner in which this program is being taken and initiated in Madan Mohan Malviya University of Technology sir. But wonderful sir, आपका experience सुन के तो I can only tell one thing sir, that I would also like to be part of this program. Let me also understand more about examination reforms, because AICTE sir not only has taken out the examination reforms policy, but in the last 2 years we have conducted more than 50 3-day workshops, on examination reforms. So my understanding or knowledge of examination reforms is also reasonably well sir. But आपका सुनने के बाद तो I am getting an impression sir, मुझे आपसे भी और सीखना पड़ेगा सर। Now this is what I always keep saying, it is जब participants जो हमारे साथ connected हैं उनके लिए sir I don't think so there can be a better opportunity than this. If people take this seriously sir, our education system not only will get improved, but we would be the finest in the world, with the world copying us in the times to come. Thank you sir, and आपके ये points surely convey हो जाएंगे अगले आधे घंटे के अंदर ही सर। कर्नल सर, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी टीम है और ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने हमें गाइडलाइन दिया था कि experts should be from means reputed institutions. So we have really NITTR Chandigarh 2 experts and 7 experts from NITTR Chennai. So they are the experts in this area, and among that we have also you sir as a ex-director of AICTE FDP cell, and I'm really very hopeful that when you take your lecture, AICTE Quality Initiative surely help you out, all the participants. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. ब्रिजेश, मैं जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम। सो मैं सबसे नमस्ते। Thank you very much. Sir. Thank you, sir. Soumya, please. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for your incredible words. Your blessings will always keep us motivated throughout the FDP. Also, thanks to B. Venkat, sir, and Brijesh Kumar, sir, for your valuable words. Now, may I request Dr. Avdesh Kumar, sir, Coordinator of FDP on Examination Reform, to please deliver the vote of thanks. Thank you, Soumya.
chief guest of this faculty development program on examination reforms, and Honorable Vice Chancellor of Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur, Professor J.P. Pandey sir, who also happens to be the patron of this program, along with AICTE Chairman, Dr. Anil D. Sahasrabudhe sir. Guest of honor, Professor S. Chatterjee sir, and my guru, and is superannuated from NITTR Chandigarh, and is not only the expert in electrical engineering, but also you'll see, you'll encounter through his lecture that he is expert in educational technology as well. The special guest for today's inaugural ceremony, immediate past chairman AICTE FDP cell, Colonel V. Venkacha, whose presence has made this inaugural ceremony very, very beautiful. So, coordinator of the program, Dr. Amit Kumar Srivastava, Director Faculty Development Cell, AICTE, Professor A.N. Tiwari sir, Controller of Examination, MMUT Gorakhpur, Professor Brijesh Kumar sir, Professor in Electronics Engineering Department, who also happens to be the Registrar of the University, and whose efforts and working with him is really, really very nice to do any job with him. University Program Coordinator, my fellow colleague and very gentleman person, Dr. Shekhar Yadav, who has really put a lot of efforts for this program. The deans of this university, the heads of the different departments, my dear colleagues, esteemed faculty members from this university and outside institutions, and also all other organizing teammates. It's my proud privilege to propose the vote of thanks in this inaugural ceremony of 1 week long faculty development program on examination reforms, jointly organized by Madan Mohan Malaviya University of Technology, Gorakhpur and AICTE New Delhi. First of all, I would like to express my deep sense of regards to Honorable Vice Chancellor sir for giving his precious time in spite of his busy schedule. I've seen just he has left for the his programs. I also thank sir for giving the opportunity of such kind. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to convey my gratitude and heartfelt thanks to Professor S. Chatterjee, my guru, for accepting our invitation and gracing this function as guest of honor of the inaugural ceremony and blessing us with his kind words. My thanks also goes to Colonel B. Venkacha, who has been the inspiring force for this program. We have contacted a lot for any, let's say, for the speaker and all. We have contacted and he was always ready to respond. So thank you very much, sir. Thank you very much. I pay my sincere gratitude to Professor A.N. Tiwari, sir, the Controller of Examination, and Professor Brijesh Kumar sir, the Registrar of the University, for guiding us throughout this the program. I also thank to my fellow colleague, Dr. Shekhar Yadav, the coordinator of this program, who has taken really a lot of pain to organize this program. I cannot say there's a lot of hurdles in organizing such kind of program, and we are going to organize really this kind of program. We have several faculty development programs we have organized together, but this is our first kind, so it is really a new experience for us. I would also like to mention the special thanks to Ms. Soumya Tripathi, who is anchoring for the program, Mr. Brijesh Kumar, the research scholar cum teaching fellow, for handling all the technical activities. Finally, my vote of thanks would not be completed if I didn't mention the efforts made by our research scholar, student volunteers, and other technical staff of the university for their continuous involvement in the program. Thank you all, and thank you all for being the part of the program.
there are a lot of registration of this FDP has been well appreciated by, we can say, through the large number of registration, and is still going on. For this today will continue up to this. We have got 175 registrations, and we can see in the lobby more than 100 people are connected. So a lot of enthusiasm there for this changing, adapting a new technology in the education system, especially in the examination reform. So with these words, I would like to again thanks to all who have made directly or indirectly any support to this program. So audience, please get benefited from this program. There are a lot of eminent speakers in the education technology. So thank you all. Thank you very much for being the part of this. So Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, sir. Now, a small announcement about the program. Sessions will resume at the same virtual Microsoft Team meeting platform at the respective time mentioned in the schedule. Now, may I request everyone to please join in for the national anthem. So if you are still facing the audio problems in the audio, so can we just put the slide on the screen and we can recite, Jen? Is it over now with this? Yes. Yes, sir. We'll take a break for 5 minutes, sir, and then we'll start session 1, sir. Okay. I would like to welcome the speaker of the first session, Dr. G. Janardhan, sir. I think he has already joined with us. He's in the lobby. Yes. Sir, good morning, sir. Are you there in the lobby? Good morning. Good morning, sir. Dr. G. So this is a welcome to you, sir, for Yes, the first session. So Yes, sir. we'll just wait for the, sir, if you No allow problem. us for 5 Yes, minutes, and then sure. we'll start the session, Yes, first session with you, sir. So